Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. This is your English class. Let's start the class with the interesting poem A to Z. मुझे उम्मीद है आप सबने पोइम सीख ली होगी क्योंकि इससे पहली क्लासेस में हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें गौर से सुने और जिन्होंने सीख ली है वो मेरे साथ सिंग करें। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। लेट्स स्टार्ट। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Very nice. Okay students, now look at this card. बच्चों याद करें इसका नाम क्या है? Yes, C. इसका नाम क्या है बच्चों? C. What's the name of our friend? C. मेरे साथ पढ़ें सब। C. 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 ओके बच्चों, क्या आपको याद है इसका बिगिनिंग साउंड क्या है? बच्चों इसका साउंड क्या है? मेरे साथ पढ़ें। ख ख ख। नेम सी साउंड ख। नेम सी साउंड ख। नेम सी साउंड ख। ओके बच्चों, आपको पोएम याद है ना जो हमने सीखी पढ़ी थी? चलिए बच्चों दोबारा से दोहराते हैं, मेरे साथ पढ़ें। IMC, IMC, the letter C, the letter C. I make a sound, k, k, k. I make a sound, k, k, k. IMC, the letter C. I make a sound, k, k, k. I make a sound, k, k, k. Okay बच्चों, we have learned the name and sound of letter C. अब हम इसका एक्शन सीखेंगे। Okay बच्चों, look at this boy. Okay, start. Name C sound k. 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 ओके बच्चों, अब हम उन अल्फाज को दोहराते हैं जिनका बिगनिंग साउंड ख है। व्हाट इज दिस? सी एंड द साउंड ख। ख कॉट, ख कॉट। ख क्लॉक, ख क्लॉक। ख कैट, ख कैट। ख काउ, ख काउ। ख कोइन, ख कोइन। ख कार, ख कार। ख क्रो, ख क्रो। ख कैरेट, ख कैरेट। ख कैटरपिलर, ख कैटरपिलर। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अल्फाज अच्छी तरह से याद हो चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, after revising the previous lecture we will move toward the next, which is about formation. आज हम सी की फॉर्मेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? सी की फॉर्मेशन।
Okay, now stand up. Make straight your right arm. Like this. Raise your two fingers. Just move the wrist. But be careful. Try to not move the elbow. Now be ready and follow me. First, we will do the practice in the air. Okay, start. Round and round. Round and round. Round and round. The formation of C is round and round. 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 Okay, students, now moving toward the table. But this time, just one finger. Start. Round and round. 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 अच्छे, एयर और टेबल एक्टिविटी के बाद हम एक और एक्टिविटी करेंगे which is also very interesting. Take the sand in a disposable plate and start the practice with your right hand one finger. Okay, start. Round and round. Okay, round and round. Round and round. Round and round. Okay, now look at this student and do the same like him. Round and round. Very good, Shyal. Round and round. You will use just one finger. Now, it's the time for another activity. Take the Play-Doh, mix it and roll it like a snack. Okay, now try to form C. Try to form C. Okay, बच्चों. Very good, Shyal. Round and round. Round and round. Round and round. Okay, students. Now open your book, page number 13. Write. बच्चों, ये C है और ये डॉट से लिखा हुआ C है. आपने पेंसिल को उठाकर इसको ट्रेस करना है और ये वाली लाइन आपके लिए बिल्कुल खाली है. इसमें आपने C लिखना है. बट इन मिड टू लाइन्स, दरमियान की दो लाइन्स में आपने C लिखना है. राउंड एंड राउंड. ओके बच्चों, ये क्या है? ओह, ये तो एक एक्टिविटी है. लीव सी. लीव सी. बच्चों, आपने सी को छोड़कर बाकी सबको क्रॉस करना है. ये देखिए बच्चों, इस तरह आपने सी को छोड़कर बाकी सब लेटर्स को क्रॉस करना है. नाउ लुक एट दिस स्टूडेंट. ओके, स्टार्ट Shyal. यस, वेरी गुड. सी को छोड़कर बाकी तमाम लेटर्स को क्रॉस करना है, जैसा कि Shyal कर रहा है. वेरी गुड Shyal. वेरी नाइस. वेरी गुड. बच्चों, आपने भी ऐसा ही करना है. वेरी गुड Shyal. Very good. Okay, students, it's your class work. Okay, now open your English notebook. It's the time for a homework. Yes. बच्चों, आपने यहाँ पर होमवर्क लिखना है. डे और डेट.
लेटर सी, लेटर सी। आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और एक खूबसूरत सी क्लॉक बनानी है और इसको कलर करना है बच्चों। और यहाँ पर आप सी लिखोगे, बट इन जस्ट मेड 2 lines, round and round. It's your homework. Okay students, today we have learned the name, sound and action of letter C. The name C, sound K, action and the story. Okay students, उम्मीद है आपको ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फॉर्मेशन भी तो पढ़ी है। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से याद हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करके एक अच्छी सी वीडियो बनवाएं और हमें व्हाट्सएप करें। ओके बच्चों, दुआओं में याद रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.